फेसबुक पे शेयर कर दूँगा, चलेगा ना? ये इंटेक के पेज पे चलेगा, यूट्यूब भी चलेगा। नहीं, अपन लिंक शेयर कर डायरेक्टली वीडियो नहीं इंडस्ट्री तो प्रोटोकॉल भी जाना है, सिंपल यूट्यूब भी करना है। नहीं एक्स्ट्रा लिंक है ये नंबर दसो नंबर 88 7210 7210 7149 सब्जेक्ट लिंक शेयर करिए होगा सेम लिंक है यही है पिक्चर इक्वल्स टू शेयर बंद करके थोड़ा बंद करके दोबारा करना ठीक है लिंक दे हाँ जी क्लिक कर ठीक है आइकन तो यार इसकी इमेज तो चेंज करेगा यार क्या रही है तो बोलो यार ये तो यहाँ की ये फोटो स्क्रीनशॉट ये वो था ना मेरे वो इसका स्क्रीनशॉट भेजो जिसने लगाइए थंबनेल नहीं है इसलिए तो थंबनेल लगाओ ये थोड़ी अब थंबनेल भेजो क्या भेजो आप खींच लो फोटो ये डाल के भेजो किसी को खींचो फोटो भेजो तो थंबनेल बना दो ये तो नहीं चल रहा ना दूजे चैनल पे करना है अपना ये ऑफिशियल पे पॉसिबल नहीं है ना स्ट्रीम की अलग है बेसिकली स्ट्रीम की अलग वहाँ तो बैठना ही है।
होल ऐड करते हैं अंदर
पोडियम पे जाएंगे ना, पोडियम पे अपने आप बच जाएगा। नमस्कार। CSIR-IMTECH में आज यानी 19 जून से 24 जून तक आयोजित किए जा रहे 1 वीक 1 लैब यानी एक सप्ताह एक कार्यशाला प्रोग्राम में के उद्घाटन सत्र में आप सबका स्वागत है। आप जानते ही हैं कि इस वर्ष जनवरी माह में शुरू हुए इस कार्यक्रम में जनवरी से लेकर सितंबर माह तक प्रति सप्ताह CSIR की एक प्रयोगशाला विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा अपनी अचीवमेंट्स और समाज को अपने योगदान का प्रदर्शन तथा प्रचार प्रसार करेगी। हम उद्घाटन कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें उससे पहले अब राष्ट्रगान होगा और उसके लिए हम सब कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद। हमारे लिए अथाह प्रसन्नता और गर्व की बात है कि आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय राज्यपाल पंजाब एवं प्रशासक चंडीगढ़ श्री बनवारी लाल जी पुरोहित हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। आपकी उपस्थिति ने हमारे मनोबल को बढ़ाया है और हमें विश्वास दिलाया है कि हम संगठन यानी CSIO के निदेशक प्रोफेसर सुब्रमण्यम अनंत रामकृष्णा हमारे साथ उपस्थित हैं और मंचासीन हैं। NBM बाय रैंक के मिशन डायरेक्टर डॉक्टर राज शिवमाला भी इस समारोह में उपस्थित हैं। नगर के महत्वपूर्ण R&D संस्थानों एवं क्रिक संस्थानों के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर हमारे साथ इस सभागार में मौजूद हैं। संस्थान निदेशक डॉक्टर संजीव खोसला से मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल पंजाब एवं प्रशासक चंडीगढ़ तथा आप सबका संस्थान में औपचारिक स्वागत करने का आग्रह है। डॉक्टर खोसला प्लीज। Respected Shri Banwari Lal Purohit ji, Honorable Governor of Punjab and Administration, Chandigarh, Dr. Kalai Selvi, DG CSIR and Secretary DSIR, Professor Anant Ramakrishna, Director CSIR CSIO, distinguished scientists, leaders from the industry, students, friends from the media and colleagues. It's my privilege and honor to welcome Shri Banwari Lal Purohit ji in the inaugural function of 1 Week 1 Lab program being organized in CSIR-IMTECH from today till the 24th of June. With over 4 decades of experience as an eminent educationist, a renowned social activist, institutional builder, national thinker, sir, it's an honor for all of us in IMTECH that a personality of your stature has agreed to grace such an important event in our history. Thank you very much, sir. 1 Week 1 Lab, a theme-based program, is expected to ignite the minds of young innovators, students, startups, and industry. Honorable Minister for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh ji, under the leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, emphasized that each of our 37 laboratories are unique and specialize in area as diverse as genomes to geology, food to fuel, and minerals to materials.
To showcase and propagate such diversity across CSIR, Honorable Minister had announced the idea of 1 week, 1 lab to be a nationwide theme-based campaign to demonstrate the technological breakthroughs and innovations in the CSIR labs. CSIR-IMTECH is the 23rd CSIR laboratory to organize this event. Established in 1984, CSIR-IMTECH is a national center for excellence in microbial sciences. IMTECH's vision and mission are to create translational ecosystems strengthened by fundamental discoveries and to address unmet healthcare and industrial needs with the state-of-art microbial processes and platforms. Through this 1 week, 1 lab event, our aim is to identify the regional needs, develop industrial collaboration, commercialization, and provide desired scientific solutions. It is also our objective to identify the next generation technology and products and motivate researchers and budding entrepreneurs to create startups. It's an important milestone also today for IMTECH because you have inaugurated a GMP National Repository of Microbial Cell Banks for Biopharmaceutical Products facility. The National Biopharma Mission under BIRAC has funded this program, which aims to empower biotech entrepreneurs and speed inclusive innovation across the nation. With GMP infrastructure, a quality management system and operational module, this is a unique facility that has been dedicated today to the nation. When we know that this 1 week, 1 lab program will enhance IMTECH's efforts towards generating more intense networks between industry, academia, and our institution. I once again thank you, sir, for accepting our invitation and being here with us for this momentous occasion. Thank you, sir. धन्यवाद डॉक्टर खोसला। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल जी से 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन करने का सादर निवेदन है। अब हम आपसे निवेदन कर रहे हैं 1 वीक 1 लैब के पार्ट के शैडो साइंटिस्ट एवं स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के वर्चुअल उद्घाटन का। धन्यवाद माननीय महोदय। अब महानिदेशक CSIR का संबोधन होगा। जैसा कि हमने सूचित किया, माननीय डॉक्टर कलई सेल्वी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हैं। आपसे कृपया संबोधन का सादर आग्रह है। माननीय डॉक्टर कलई सेल्वी। Vanakkam and pleasant morning to every one of you. I'm extremely happy to be a part of this 1 week 1 lab program of CSIR-IMTECH. Most respected His Excellency Panwarilal Purohit ji, guests and invitees of 1 week 1 lab event of CSIR-IMTECH and my CSIR family. Today is a very special day, not only to CSIR-IMTECH but also to CSIR on the whole. Why? Because the 1 week 1 lab program of CSIR-IMTECH is getting inaugurated by His Excellency Panwarilal Purohit ji. Sir, on behalf of entire CSIR family, I extend a very, very warm welcome to you, and I join Dr. Sanjeev Khosla in appreciating and thanking you for the time that you are sparing with us for this particular day and encouraging the CSIR-IMTECH family, for which we are really, really grateful to you. And sir, as you know very well that we are now getting a lot of importance and more than enough importance for the field of science and technology across the globe. Why? Because today the globe has realized that whatever it may be the challenges that mankind is either experiencing today or we are expecting it in the coming years, all the issues could be solved only by means of science and technology.
And a country like India and the kind of a vibrant leadership in which country like India we are progressing, we are also no way exceptional to the kind of importance that is being given to science and technology. And obviously, we the CSIR family members, we are the greatest beneficiaries. When the country India has taken the presidency for G20, the national leadership came up with a kind of a slogan like "One Earth, One Family and One Future." And all the time, not only the national leadership, but also the the Honorable Minister of Science and Technology, Jitendra Singh Ji, also every time emphasizing the CSIR family to take care of One Health as the most important aspect. Sir, we from CSIR family, we are fully aware that for a country like India, which is a developing country today and which has to be promoted as the developed country in the coming days, we are fully aware that apart from water security, food security, strategic security and energy security, the healthcare related security is very, very important, and we would say that this is the most important vertical. And when we talk about One Health, sir, we are fully aware that it is not only the human health, but also the animal health, plant health, soil health, and we from CSIR family, we these days included even data health. Especially when it comes to human health, sir, we have a minimum of half a dozen CSIR laboratories who have already dedicated their full-time research only to take care of human health, and few other laboratories we are taking enough care for human health as well as animal health. And CSIR-IMTECH is one such laboratory wherein we have the very unique eye care facility, and they are extending their service to other educational, academia and research organizations also by way of procuring, breeding, supplying and raising series of animals, I would say experimental animals that include rabbits, chicken, rodents and mice and hamster rolls. So apart from this kind of a facility, CSIR-IMTECH family is fully aware that the institute is exclusively meant for microbial research, and today we are talking about AMR, antimicrobial research, for which this particular laboratory is the nodal laboratory. And sir, taking this lab as a nodal lab for AMR activity of CSIR, we are talking to the leadership from the Niti Aayog and also from ICMR and with other ministries also, and we are trying our level best to do justice in terms of coming up with new antibiotics, because we from CSIR, we are fully aware and we have given importance to the World Health Organization's 2017 report, wherein it was clearly mentioned that this is high time that world, the globe, has to pay importance and attention to drug-resistant pathogens, and therefore new antibiotics become the need of the hour. And so while we are developing drugs for infectious disease, we are also trying our level best, and we are coming up with some kind of a platform based on which we will be ensuring our preparedness to mitigate even future pandemics, if any. We wish we should not have any kind of pandemics in the future, but then we are ensuring our preparedness, and number of CSIR laboratories are involved in that research, and IMTECH is also playing a very significant role. And sir, now you may be fully aware that apart from this antimicrobial research, virology is another very important factor, because not only we call news is spreading viral, virus is also spreading so viral to just spread the disease, and we have very recently experienced the full effect of virus-related problems in the name of COVID. And sir, in any form of virus, this particular institute called the CSIR-IMTECH,
they are fully getting themselves geared up to understand and also to address the issues in terms of their fundamental as well as translational research. And so we from CSIR, we always consider whatever research that we do in the laboratory, in the lab scale, we have to really promote it as a kind of translational research, either in the form of finding its application to industry, or it should find its application to benefit the society at large. And this particular Institute of IMTECH falls into the second category, that they take care of more than enough health-related aspects, wherein they are able to connect society at large, but they are able to do justice only by taking industries also on board. Meaning is, we from CSIR, and especially from CSIR-IMTECH, they work closely with research organizations, academia, ministry, industry, and the final goal is to serve this nation and to touch the unreached portion of this society by means of their healthcare related service. And so rightly pointed out by Dr. Sanjeev Koshla, the director of CSIR-IMTECH, the Honorable Minister, who is known for coming up with new ideas and novel ideas, and invite all the CSIR labs to think very strongly about celebrating 1 week, 1 lab program, wherein we from CSIR, we will just open up to the society, we'll open up our research as well as our discussions, and our scientists connect to the society in the form of meeting students on one day, meeting with industries on another day, meeting with the startups, entrepreneurs, and other sectors from the state government on some other day. And this institute will be totally open for any kind of discussions and every possible discussions exclusively during this 1 week, apart from the way they are doing it throughout the years. And this 1 week, 1 lab, CSIR-IMTECH is really celebrating in a very different way, and I should really wish to place on record my appreciations and congratulations not only to the director of CSIR-IMTECH but also to the entire CSIR-IMTECH family, because they are now dedicating the facility to the nation, and it is getting inaugurated by His Excellency Panwarilal Purohit ji. And sir, I am extremely happy that you have consented to be with us and to motivate our scientists. Even though we from CSIR family, we are motivating internally our scientific researchers, we always gain some extra energy, and the scientists will be able to run extra miles whenever we are getting this kind of support from the other end, especially from the government sector. And sir, we are fully aware that the present government is always prioritizing the sustainable development goals and very focused, targeted research, 1 district, 1 product, 1 laboratory, at least 1 district for its adoption. And sir, these days we have gone even 1 mile apart from that, beyond that. Even every society member of CSIR society is getting himself or herself attached to a minimum of 1 CSIR society. From CSIR, sir, we are extremely proud because the Honorable Prime Minister of the country is the President of CSIR Society, and the Honorable Prime Minister himself made it as a point that every society member should adopt 1 CSIR laboratory, and they have to get themselves connected so closely for the institute for its every scientific and technology related activities. And sir, we are perfectly complying with the kind of suggestions being shared by the Honorable Prime Minister. So this 1 week, 1 lab program is one in that kind of a series of events and celebrations that are going on across all the 37 laboratories of CSIR. I take this opportunity again to place on record my sincere thanks, appreciations, and congratulations to the CSIR-IMTECH family. With these few words, once again, I wish this event every success, and I urge the scientific fraternity from
CSIR-IMTECH to take care of the One Health aspect of this particular country with the topmost priority from your end for its end-to-end requirements in terms of science, technology and innovation. And I strongly believe events like 1 week, 1 lab will also add paramount value and importance to such efforts which are being made by you. With these few words, thank you so much for the opportunity. And sir, you should really apologize me because of my pre-commitments. I was not able to make my physical presence over there, but I thoroughly enjoyed every speck of this event. Thank you so very much. All the very best to you. Namaskar. धन्यवाद महानिदेशक मैडम। और अब समय है माननीय राज्यपाल पंजाब एवं प्रशासक चंडीगढ़ श्री बनवारी लाल जी पुरोहित द्वारा उद्घाटन संबोधन का। आपसे CSIR-IMTECH के 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम के उद्घाटन संबोधन के लिए हम सादर निवेदन करते हैं। Dr. Mrs. N. Kalai-Selvi, Director General CSIR. We have heard the speech just now. Dr. Sanjeev Khosla, Director, IMTECH, Professor N. S. Anantha, Ramakrishna. And honorable scientists and dear students and invited guests. It's an honor to be at the inaugural ceremony of the 1 week 1 lab event organized by CSIR Institute of Microbial Technology. Each of the 37 CSIR labs spread across the country are organizing similar events to showcase their work for stakeholders to learn about it. In fact, one thing I tell you, when I received the invitation for this program, I was in dilemma whether to accept or not. The reason, altogether different subject for me. My subject is commerce. On law, on commerce, on import, export, finance, accounts, everything I can speak for hours together. But this subject, I told those who came to invite me, it gets very difficult for me. I need feedback from you. Sir, we will give you. Okay, one problem is solved. Then I decided, okay, it's an opportunity to see the institution, visit the institution and meet our great scientists. Because I had occasion, because I was in Parliament 3 times. And all the 3 times, I opted for Defence Consultative Committee only. I was close to Abdul Kalam sir because he was that time DRDO chief. In fact, I tell you, without knowing anything, without that much knowledge, we used to grill him. Why you are taking that much time for research and all that? So beyond that, why you are spending that much money? That much money is spent, crores and still there is no result, and like that. As a member of parliament, we used to ask, but he was very close. One time, there was one
dispute. And I have to approach the High Court. The dispute was about because in Nagpur there is near ordnance factory where Prithvi missile final charge is taking place. So that land, around the land, that was some government venture to give it to private for mining, private company for mining. I registered because this should not be done. I approached the court. Then the government was so shrewd, cunning. They obtained a certificate from Dhanbad, Mining Institute, and produced it in the court. Sir, there is no effect on the ammunition. This is the certificate. They are the expert. But luckily I was present in the court. I told that these people, they are expert in the mining. Ammunition, whatever is used in the mining, they are expert of it. But not the ammunition used in the missiles. They are big zero, they don't know anything. How you believe? Then court asked my advocate. Because generally, you know, in the court, only advocates are, clients are not supposed to speak even. Then court asked, Justice Sri Krishna, he asked my advocate, Mr. Deshpande, then who is the expert about the ammunition used in the missile? Luckily I was there. I told my advocate, I was talking, but he was busy in arguing. Then court told him that your client wants to tell you something. Then I told him, sir, father of missile Abdul Kalam, he is the expert in whatever is used in the ammunition and effect of it. He will be able to tell you. Then the committee was formed. Then 4 or 5 times he visited to our area. So the interaction took place. So closeness also increased. Then he gave the verdict, nothing doing. During a radius of 5 kilometers, no mining activity can take place. That was the judgment. And they had to leave everything. That much connection. Here, when I came to know, I accepted. You are doing really wonderful work. Hats off to our scientists. You are doing wonderful work, wonderful research. Because mine is a public life. I rarely get impressed. All public life of 50 years. Twice I was MLA, thrice Member of Parliament, then Governor, Assam, Governor, Meghalaya, Governor Tamil Nadu, then Governor here. The entire public life. Generally, but today, sir, I am very much impressed. And first time visit, I would have missed. I was in the country wondering why you have not invited me all these 1.5 years. You have invited me. Please invite the people, don't be shy. So you are doing wonderful work. Everybody will be impressed. People should know what actually you are doing here. जानना तो चाहिए. Anyway, I continue. As I gathered during week-long event, CSIR-IMTECH is organizing events like scientific lectures, panel discussion, technology exhibition, Jigyasa, Scientists Connect event, skill development programs, and startup and investors meet. Interestingly, during this whole week, CSIR-IMTECH declared its gates open to the general public. Many events being organized each day share scientific knowledge via fun activities for the visiting children and adults. I believe, besides establishing new synergies, this event shall help IMTECH and innovators of the region to develop new network with eminent researchers across the country. Today I am also pleased to announce that the GMP National Repository for Microbial Cell Banks for Biopharmaceutical Products facility has been inaugurated.
For only this much work I came over here. Rest I am getting for myself, to educate myself. This is one of its kind in the country, with GMP infrastructure quality management system operational modules. It is expected to contribute towards national mission Make in India and Atmanirbhar Bharat in the biopharmaceutical domain. Friends, currently getting quality cell banks in India is a major challenge. As it involves high cost licensing and royalty charges, uncertainty in identity and purity, shipping cost, delays in delivery and custom duty payment. Having such facility here at Chandigarh will fill this major and much needed gap in biopharmaceutical space and is expected to catalyze country's rapidly growing biopharmaceutical sector. The facility is envisaged to provide accessibility to the industries, startups, entrepreneurs, MSMEs, as well as researchers, organizers with globally recognized cell bank and expression system. This, I believe, is the first of its kind facility in India and will serve to the national mandate development of affordable biological drugs like biotherapeutics and vaccines against various communicable and non-communicable diseases. It is heartening to observe CSIR-IMTECH has always strived to perform research in the frontier areas of modern microbiology and provide biotech industry with highest quality of services, innovative solutions, microbial biotechnology. You have chosen the path of integrated research, development for microbial technology. Over the years, your scientists have excelled diverse areas of molecular microbiology. CSIR-IMTECH successful collaboration with Vikram Sarabhai Space Center, the lead center for ISRO, for the development of microbial consortia for biodegradation of perchlorate is a testimony how indigenous technologies can boost Atmanirbhar Bharat mission of the government of India. One thing I tell you, our scientists are respected everywhere. They have reached at so many places. I had been to Houston, sir, and I moved the entire labs and everything. The people, I think 80% were Asians. They could recognize me and they used to wave from their cabin chambers. Such a wonderful one. See, from India and Asian countries, these scientists, they are working here. But you should not go. You have to serve here only. I don't agree with you. There should be no brain drain. Our scientists should remain here and serve our country. Our country is going ahead. CSIR-IMTECH is playing a major role, training students, teachers and school children, especially in Punjab state and surrounding regions under Jigyasa and Skill Development Program to make them ready for next generation scientists. Friends, since ancient times, pursuit of knowledge has been respected in our country. There existed a flourishing tradition of scientific endeavor, which covered almost all major areas of human knowledge and activity. These included mathematics, astronomy, physics, chemistry, medical science and surgery, civil engineering and architecture. है ना, हमारा भारत का हजारों वर्ष पहले की सभ्यता है, बीच में गायब हो गई। रामायण क्या है, महाभारत क्या है, अग्नि बाण, ये बाण, वो बाण, जिससे वर्षा हो जाए, ये हो जाए, क्या है, these were the missiles उस जमाने के, कितना आगे था उस समय। लक्ष्मण को ऑलमोस्ट जब लगा तो हनुमान कहां से लेके आए, रिसर्च ही था ना, उसमें मेडिसिन थी, चले गए थे, पूरे बॉडी में शायद पॉइजन हो गया होगा, तो डॉक्टर ने कहा कि ये यदि जड़ी बूटी आती होगी विद इन 24 आवर्स तो लाइफ कैन बी सेव।
हनुमान जी गए लाए, कुछ था ना उस जमाने में, बीच में लोप हो गया हमारा सब कुछ है? तो बहुत पुराने जाने की जरूरत है। नालंदा था, हमारी यूनिवर्सिटियां कितनी थी, तक्षशिला थी, पूरे वर्ल्ड के लोग आते थे यहाँ टू गेन द नॉलेज। पर ये तो अंग्रेजों ने सब गायब कर दिया परसों की गुलामी से। अब फिर से मोदी जी के जमाने में एकदम से उठ रहा है, आज कदर हो रही है। साइंटिस्ट का नाम हो रहा है पूरे इंडिया में, अब साइंटिस्ट की पहचान हो रही है बिकॉज ऑफ आवर लीडरशिप। उनको वैल्यू समझ में आ रही है, द मिरेकल्स यू कैन डू, आप लोग कर सकते। And whatever is expected, you are doing. You are not less than anything. And only 2-3 things I will tell you. बाहर का तामझाम भूल ही जाओ। जब साइंटिस्ट बन गए, only understand that you have to lead a very simple life. Nothing doing. बाकी तो सब नकली काम है। कहाँ जाने का है? अपनी छोटी गाड़ी रही, अपने लिए बेस्ट है, सेल्फ ड्रिवन, अपन ठाट से आए, ठाट से गए, अपने फैमिली के साथ में थोड़ा घूम लिए, एंजॉय कर लिए। अपनों क्या करना है, मारुति का, BMW का, करोड़ों की गाड़ियों का, नथिंग डूइंग। उतना मन पे कंट्रोल रहा, रिसर्च करना है, कितनी बड़ी सेवा कर रहे हो, हाउ मच यू आर डूइंग है। बाकी दुनिया में कहीं भी करप्शन की बात होगा, परंतु आई एम प्राउड टू से हमारे साइंटिस्ट के ऊपर एक दाग नहीं लग सकता है। हमारे कंट्री के साइंटिस्ट ईमानदारी से जितना भी ज्ञान हासिल किया है। और एक चीज है, ज्ञान सरिता की तरह है, नदी की तरह है, बहते ही जाना चाहिए, देते रहिए, गुरु बनिए, साइंटिस्ट के साथ में गुरु भी बनिए, सिखाते जाइए, अपना जो ज्ञान है बांटते रहिए। एक जगह स्ट्रेटेजी होना ही नहीं चाहिए। पानी रहता ना, बहता पानी पवित्र रहता है, बहता पानी स्वच्छ रहता है। एक जगह इकट्ठा हुआ वर्गों का पानी ठीक नहीं रहता। ज्ञान बांटिए, बहुत बड़ी सेवा आप राष्ट्र की कर रहे हो। एंड आफ्टर कमिंग ओवर हियर, माई फीलिंग विद सच सिंसियर टीम, सिंसियर सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा, कोई रोक नहीं सकता है, ऐसे मुझे पता लगता है। आप कर दोगे सपना पूरा, तो कलाम साहब का, प्रधानमंत्री जी का सपना है, पूरा करो। भाई आई वाज टॉकिंग अबाउट द सिंप्लिसिटी। साइंटिस्ट का सिंप्लिसिटी का लेक्चर देने की जरूरत क्या है? क्वेश्चन आ सकता है ना। Since I have told you, I was very close to Abdul Kalam Sahab. उनका लाइफ देखो, he started his career, पेपर बांटने वाले बच्चे की तरह से, गरीब घर में थे, रामनाथपुरम में, पेरेंट्स गरीब थे, छोटी सी नाव थी, फैमिली को मदद करना, हाकर का काम किया ना, ट्रेन आती थी, पेपर का बंडल उठाते थे, घर घर बांटते थे। That is the starting of his career. Become such a big scientist, DRDO chief of Minister, retire हुए. Such a simple man. That's why I am telling you. Because I had interaction with him, very close interaction, for almost 15 years. I had interaction continuous. So वही अब्दुल कलाम साहब after retirement अपने साइंटिस्ट फ्रेंड्स लोगों के साथ में मिलना, हैदराबाद में रहते थे। मॉडरेट गेस्ट हाउस, छोटा सा साधारण कमरा, 10 बाई 15 का, उसमें एक आधी तरफ 2-3 चेयर लगी है, अपना बेड किताबों से भरा हुआ। साइंटिस्ट की तो किताबें भरे रहेंगी ना, ये तो साइंटिस्ट की पहचान है। 2 चीज पहचान है साइंटिस्ट की, चश्मा और किताबें, चश्मा लग ही जाता है तो साइंटिस्ट दिखता है। तो थोड़ा बाल हेडेड रहे तो 101% ये रियल साइंटिस्ट है। तो रिसीव्ड ए फोन कॉल direct from the Prime Minister. Sir, we have decided
यू टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हैदराबाद में थे, छोटे से कमरे में. सर, यू गिव मी 24 hours टाइम, आई विल लेट यू नो बाय टुमारो. दैट वाज द रिप्लाई कलाम साहब का. कलाम साहब ने पर वाजपेयी साहब ने बोल दिया, ओके यू टेक 24 hours टाइम, बट आई वांट पॉजिटिव रिप्लाई. ये भी राइडर लगा दिया अपना अधिकार का उपयोग करके. ओके, ये एक्सेप्टेड. राष्ट्रपति बने, 2 सूटकेस लेके गए, विथ 2 सूटकेस, 1 full of books, 1 full of clothes. कंप्लीटेड. क्या डिग्निफाइड और ग्रेसफुल. ज्ञान बांटते रहे 5 साल हैं पूरे, पर्टिकुलरली अमंगस्ट स्टूडेंट्स, सीनियर स्टूडेंट, जूनियर स्टूडेंट, बच्चे कोई भी हो, पूरे प्रोग्राम उनके देख लो आप. 90% ऐसे ही प्रोग्राम मिले. कॉलेजेस में घूमे, साइंटिस्ट में गए, सब जगह गए. और 5 साल कंप्लीट करने के बाद में निकले ना, नथिंग है. 2 सूटकेस ओनली, 2 सूटकेस, नथिंग एल्स. सच्चे सारे आदमी वही अपने 2 सूटकेस, पुराने सूटकेस लेके गए, नया सूटकेस भी नहीं लिया उन्होंने, राजभवन का वहीं छोड़ दिया है. सच्चे सिंपल लाइफ में कंट्री की इतनी बड़ी सेवा की है. एंड आई थिंक फॉर साइंटिस्ट जनरेशन ही शुड बी योर रोल मॉडल. ही शुड बी योर रोल मॉडल. नो प्रॉब्लम. इस तरीके से रहेंगे, देश को चमका दोगे, आप भी चमकोगे, देश भी चमकेगा. No doubt, our people time and again, different parts of the world and in various disciplines have shown their ability to innovate and invent. We have many examples how Indians doing research have been applauded and have received accolades from the global community for their outstanding work. The quest for knowledge, however, is unending. Research for new discoveries must continue as we cope with changes and new challenges which the world is facing today. This also becomes all the more important as the world is moving forward rapidly, decisively into an era where societies and economics are incrementally based on knowledge. Scientific efforts can turn into great achievements only when they hit the ground from the lab. When their impact is from global to grassroots, when they expand from journals to reality, when the innovations from research reflects in real life. I would like the scientists present here to develop such an institutional framework which would attract young talent, give them an opportunity to progress. For example, talent funds and a hackathon event can be organized to spot scientifically minded children. Then the perception of those children can be developed through a proper roadmap. I would like to tell one thing from my public experience. Lot of research is being taking place in almost all the streams in the country. But what is lacking mostly, कितने research paper है? I meet the scientists. Being in Tamil Nadu, I was chancellor of 20 universities. As a chancellor, I had to interview for the selection of VCs and professors. What actually is happening? They used to boast, उनका पढ़ो बायोडाटा, कितने research papers, कोई 200, 300, 400 research papers, research subject, इतने books. परंतु क्या होता है, परकोलेट नीचे तक, ग्रास रूट पर, कॉमन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है. दैट मैकेनिज्म, उसको स्ट्रेंथन कैसे करना है, दैट इज ऑल्सो रिसर्च सब्जेक्ट. नीचे तक पहुंचे. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर के लिए अभी हमने देखा, आई वाज टॉकिंग टू दैट स्टूडेंट, वंडरफुल, टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर सिस्टम. पर वो फार्मर के पास, मेरे फार्मर के पास नहीं पहुंचता. अभी भी मैं आया मैं फार्मर, अब मैं तो बिजी रहता हूँ पब्लिक लाइफ से, पर मेरे खेत में, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, वो मेरा दीवान जी
जो वर्षों से कर रहा है वही खेती करता हो, जरा सा भी इधर उधर होने की कोशिश नहीं करता। इवन उसको सीड अरे बदल तो सीड बदलने को तैयार नहीं, वो चल रहा है। तो उसको डिटेल में कौन समझाए। फिर अल्टीमेटली थोड़ा बहुत बदलाव कर रहे हैं, थोड़ा बहुत लेटेस्ट आ रहे हैं, समथिंग। बहुत बड़ी सेवा आप लोग कर सकते हो। थोड़ा सा आपकी टीम को फील्ड में भी भेजो, तो पिकनिक हो जाए, थोड़ा बहुत खर्चा भी करो बजट में। होगा बजट, डायरेक्टर का बजट में, नहीं तो मेरे को बोलो, मैं बढ़वा देता हूँ। उधर फील्ड में भेजिए। Before I conclude, says that the United Nations has declared this year, that is 2023, International Year of Millets. On the soil of India, this is a matter of great pride for every Indian. Millets इतना फायदा है। राइस, बासमती राइस में जितना पानी लगता ना, यू आर साइंटिस्ट, यू मस्ट बी नोइंग। और यदि बाजरा हम करें, मिलेट्स करें, जवारी, 1/10 पानी लगेगा। 1/10 पानी का कितना सेविंग हो जाता है। दैट इज न्यूट्रिशियस फूड। बाजरे की रोटी, जवारी की रोटी, मकई की रोटी, मिस्सी रोटी जो बनाते हैं, टेस्टी भी रहती है और फायदे की भी है। चावल गेहूं वगैरह से, दैट इज मोर बेनिफिशियल। तो इसको प्रोपोगेट करिए और इस पर रिसर्च करिए, और भी काफी रिसर्च हो सकता है। एंड दिस इज ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है। यू कैन डू समथिंग, एंड दैट्स व्हाई आई कम टू रिमाइंड यू दिस सब्जेक्ट ऑल्सो। ऐसा मत बोलो कि हमारा सब्जेक्ट हमारा हर एक सब्जेक्ट है, जिस भी तरह से सेवा कर सकते हैं। ऑलवेज बी ट्रूथफुल। है ना, मार्टिन लूथर किंग हैड टोल्ड, इफ वी सी द ट्रूथ एंड सी टू स्पीक, इफ द डे वी स्टार्ट टाइम। बिल्कुल सच्चाई पे चलिए, तो डरने का जरूरत नहीं किसी को भी। क्या होगा, यहाँ ये टेबल से वो टेबल पे बैठा दो, बैठने को तैयार है, हमारा क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा। पर हम तो बोलेंगे सच्चे, सच्ची बात बोलेंगे। हैं, ज्यादा से ज्यादा चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ से बेंगलोर भेज दो, बेंगलोर भी बेटर है, चंडीगढ़ भी बेटर है, हमको क्या डर है। तो आपसे कॉन्फ्रेंस करने को नहीं बोल रहा हूँ। डायरेक्टर जनरली ट्रूथफुलनेस, सच्चाई पे चलना चाहिए। दिस शुड हैपन ऑलवेज। आप चमकोगे, सच्चाई पे चले ना। एक चीज मैं बताता हूँ, ईमानदार कौन है, रिलीजियस कौन है, रिलीजियसली काम करने वाला कौन है, उसके लिए कोई बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल रहता है, ऑनेस्ट है, हाईएस्ट कैरेक्टर का है, पूरा मोहल्ला जानने लग जाता है, वो अपने आप चमकता है, अपने आप लोग उठा लेते हैं उसको। चिंता ही करने की जरूरत नहीं। वी नीड नॉट प्रोपगेट आवरसेल्फ फॉर आवर कैरेक्टर। बस सच्चाई से गर्दन उठा के चलो, इतना ध्यान रखें हमारे कपड़े पे कोई दाग न लग जाए। और कीप ऑलवेज इन माइंड, इल गॉटन मनी शुड नेवर एंटर माई हाउस, कम व्हाट में। पाप का पैसा मेरे घर में नहीं आना है, उसको बचा के रखना है। ये बात का भी ध्यान में है, कितना भी अटैचमेंट हो। साइंटिस्ट तो सेवा करने के लिए है ना, पूरा सेवा करना है। घर वालों को भी आदत डाल दो, नो हार। सिंपल चलते हैं ना, सिंपल रहते हैं। आई टेक अनदर योर 5 minutes, बट आई टेल यू, लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, पब्लिक लाइफ है। When I was in law college, one of my friend, मेरे से थोड़े से बड़े थे, एज में 2-3 साल की मैरिज हो गई, वो बन गए तहसीलदार, मैं कुछ बना नहीं, बस सिलेक्टेड, शादी भी हो गई। 2-3 साल बाद में मैं एमएलए बना, एमएलए बन के काम में लग गया, उनके जाना बंद हुआ। एक दिन फोन आया, उस जमाने में मोबाइल नहीं थे ना, लैंडलाइन थी। तो उस टाइम, हमारे टाइम में साइंस आगे बढ़ गया, तो हमारी भाभी का फोन आया, अब तो आप बहुत बड़े आदमी बन गए, मतलब एमएलए बन गए ना, अब क्यों आओगे हमारे गरीबों के घर। मैंने कहा टांटिंग क्यों कर रही है भाभी तुम, बोलो जब आ जाएंगे। हम गए,
गए, सही बताता हूँ, गवर्नमेंट क्वार्टर रहते हैं ना तहसीलदार के, जैसे गवर्नमेंट कॉलोनी में, फर्स्ट फ्लोर पे था, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर हमारा नागपुर में रवि नगर में। तो फर्स्ट फ्लोर पे हम गए उनके क्वार्टर में, बेचारे दोनों हस्बैंड वाइफ, बच्चा स्कूल गया हुआ था, उसने हमारे लिए महाराष्ट्र का आलू और चाय बनाने के लिए अंदर गई वो, परंतु बीच में अपना काम छोड़ के बाहर आई, अपने हस्बैंड को बोल रही है, खींच के ले गई खिड़की के पास, मुझे देख रहे ना वो श्रीवास्तव मैडम अपनी पड़ोसन कल ही लाई 5,000 की साड़ी, देखो क्या ठुमके चल रही है। लगे बेचारे को, वो ईमानदार आदमी जैसे एकदम ही, माफ करना वो श्रीवास्तव, ये कोई हो तो माइंड नहीं करना। तो वो देखा, मैंने कहा मैं भी जाऊं, मैं भी खिड़की के पास जाके देखा, तो साड़ी तो पहन के जा रही थी, कैसे आई, अरे मैंने कहा भाभी, उसको भी हमने देखा, वो 5,000 की साड़ी पहने है, तू 500 की साड़ी पहने, पर तेरा चेहरे का तेज है ना, वो तेरे घुटने के बराबर नहीं आती, क्या बात कर रही है तुम? तेरा चमकता है, तेरा 500 की साड़ी, उसमें क्या फर्क होता है? देखा जनरली this is actually I tell you, she was very much satisfied and happy. बोले भैया आप ठीक बता दिया, ऐसी बात चलो, अच्छा करिए। So work can be done to improve India's millet and their use. Effective steps can be taken by the scientific community, reduce post-harvest losses with the help of biotechnology. I am confident that this stakeholder connective will help us in refining our thoughts and that there will be more need-based collaboration in future. My best wishes to the 1 week, 1 lab initiative by CSIR-IMTECH and for the opening of the new GMP facility. My best wishes to all of you. Thank you. Jai Hind. प्रदान करने व उत्साह बढ़ाने वाले शब्दों के लिए मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल जी का इस सभागार में मौजूद सबकी ओर से हार्दिक धन्यवाद। हम संस्थान की ओर से माननीय मुख्य अतिथि को सम्मान स्वरूप एक मेमेंटो भेंट करना चाहेंगे। संस्थान निदेशक डॉक्टर संजीव खोसला जी से यह सम्मान प्रदान करने का आग्रह है। धन्यवाद सर। आप सबके औपचारिक धन्यवाद का प्रिविलेज मुझे प्राप्त हुआ है। मैं CSIR महानिदेशक के नेतृत्व में निदेशक सहित पूरे इमटेक परिवार की ओर से आज के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल एवं प्रशासक चंडीगढ़ श्री बनवारी लाल जी पुरोहित का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए संस्थान के लिए अति महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित होकर बहुत ही प्रोत्साहन और प्रेरणास्पद संबोधन के साथ इसका उद्घाटन किया। कहा जाता है कि वेल बिगन इज हाफ डन। हमें विश्वास होता है कि सप्ताह भर चलने वाला ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होगा। हम अपने महानिदेशक महोदया डॉक्टर कलाई सेल्वी का भी धन्यवाद करते हैं कि CSIR परिवार के मुखिया के रूप में
वे आज इस अवसर पर हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़ी और हमारा मनोबल बढ़ाया। योग्य मार्गदर्शन के लिए निदेशक डॉक्टर संजीव खोसला व इस आयोजन की व्यवस्था से जुड़े अपने सभी सहकर्मियों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। अब कार्यक्रम की समाप्ति पर राष्ट्रगान होगा और हम सब राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आप सब चाय के लिए मेन बिल्डिंग रिसेप्शन एरिया में सादर आमंत्रित हैं। और अब होगा राष्ट्रगान।